लॉस एंजलिस के पास एक समुद्र में ऑन अ लोनली माउंटेन इन जापान, कनाडा के पूर्वी तट पर एक प्लेन क्रैश बदल देता है एक बहुत ही बड़े जंबो जेट को इन मैंगल्ड पीसेस, और इसका कारण कहीं दफन है रैकेज के अंदर। In the business, we refer to often finding the golden nugget. A modern jet is made up of hundreds of thousands of parts, and a failure in any one of them can lead to disaster. A missing screw can jeopardize the safety of flight. Constant checks जो हैं वो जो है जहाजों को उड़ने में मदद करते हैं, and they keep the passengers safe. A single oversight can lead to tragedy. Something exploded. Help me, hold it, help me, hold it! नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आए होते हैं एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो की है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे द फेटल फ्लॉ की। अ हॉट समर नाइट इन फीनिक्स एरिजोना। रात के 11 बज चुके हैं, बट द मेंटेनेंस वर्कर्स एट साउथ वेस्टर्न एयरलाइंस आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, और वो आज खोलेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट बोइंग 737-700 प्लेन। तकरीबन 40 सुपरवाइजर और मैकेनिक्स ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि प्लेन जो है इट इज फिट टू फ्लाई अगेन। Without proper maintenance, airplanes don't fly. Pilots are usually the focus for the operation of the airplane, but maintenance has an equally high priority role in the safe operation of any aircraft. To keep the planes in perfect flying fit condition, they get more health checks than most of the passengers. It is a very intricately weaved web between the operation of the airplane and the maintenance of the airplane and the management of the airplane. Passenger planes जो जितनी बार भी स्टॉप पे आते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। इसको बोलते हैं ए चेक। और ये क्या होता है, सिर्फ एक सरसरी निगाह से प्लेन के आसपास चक्कर काटना, जिससे कि जो मोस्ट ऑब्वियस डिफॉल्ट्स हैं वो सामने आ जाती हैं। मोस्ट इंटेंसिव चेक्स आर डन एट सेट इंटरवल्स, और वो कहलाते हैं बी और सी चेक्स। आज की रात जो वर्कर्स हैं दे आर परफॉर्मिंग अ सी चेक। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इट कैन रिक्वायर हंड्रेड्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क। इट कैन रिक्वायर हंड्रेड्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क, और ये सब काम आज रात ही पूरे होने हैं, जिससे कि प्लेन जो है अगले दिन सुबह उड़ने के लिए तैयार हो। ये बहुत ही मैसिव चैलेंज है, क्योंकि जो मॉडर्न जेट्स होते हैं दे आर मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल पीसेस। उन्नीस 1903 में जब राइट बंधुओं ने पहली बार उड़ान भरी थी तो उनके जो प्लेन था तकरीबन उसमें 1500 पार्ट्स थे, और ये उड़ान भरी थी नियर किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना। और बोइंग 737 में तकरीबन 3,60,000 से ज्यादा पार्ट्स हैं। You have to ensure that every one of those components is doing its respective job. It doesn't matter how big the part is, a missing screw can jeopardize the safety of flight. It's a lesson which the aviation industry has learned the hard way. 31 जनवरी 2000, on board the Alaska Airlines Flight 261, the situation is desperate. Operating a damaged plane, the pilot जो है हर संभव कोशिश कर रहे हैं to land this aircraft at Los Angeles airport, but the plane is not responding to controls. The MD-83 is plunging towards the Pacific Ocean. जो प्लेन्स इस प्लेन के नजदीक उड़ रहे हैं उनके पायलट्स जो हैं रिपोर्ट करते हैं ये नाइटमेयर सीन बैक टू लॉस एंजलिस कंट्रोल्स। Yes, sir. He is definitely in a nose down position, descending quite rapidly. Definitely out of control. Plane's inverted, sir. Okay. Yeah, he's inverted.
Push the blue sign up! There! Here we go! And he just hit the water. Yes, sir. He hit the water. He's down. फ्लाइट 261 क्रैश कर जाती है ऑफ द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया एट 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। जो 88 लोग उस प्लेन में सवार थे उन सबकी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशंस क्विकली। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं उनसे उनको कुछ अर्लियर क्लूज मिलते हैं। We have a jam stabilizer and we're maintaining altitude with difficulty. We immediately suspected some problem in the tail of the airplane, which is where the controls are. There's something was wrong back there. इन्वेस्टिगेटर्स जो है इस MD-83 के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स का मुआयना करते हैं। जो स्टेबलाइजर होते हैं वो प्लेन की जो पिच होती है उसको कंट्रोल करते हैं। द एबिलिटी टू टिल्ट अप एंड डाउन। जब स्टेबलाइजर ऊपर की तरफ होता है तो प्लेन का नोज जो है नीचे की तरफ हो जाता है, और जब स्टेबलाइजर नीचे की तरफ होता है तो प्लेन का नोज ऊपर की तरफ हो जाता है। MD-83 में एक मैकेनाइज्ड जैक स्क्रू होता है जो कि टेल सेक्शन में होता है प्लेन के, और वो स्टेबलाइजर को अप और डाउन मूव करता है। और जब इन्वेस्टिगेटर्स इस स्टेबलाइजर को क्रैश साइट से रिकवर करते हैं तो उनको एक बहुत ही पजलिंग डिस्कवरी मिलती है। The jack screw wasn't mated with the nut that it screws into. It was just by itself. And the nut was found in another piece of structure a few feet away from where the jack screw was. To have a screw separate itself from a nut with very thick threads surprised us. और जैक स्क्रू के बिना द स्टेबलाइजर वाज बियॉन्ड कंट्रोल, और स्टेबलाइजर के बिना द प्लेन वाज डूम्ड। इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत ही क्विकली ये डिस्कवर कर लिया था कि किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, और अब वो जानना चाहते हैं कि क्यों। द आंसर इज ट्रेजिकली सिंपल। There was no lubrication or visible grease on the working area of the screw. That was surprising and strange. FAA जो है एक डायरेक्टिव इशू करता है जिसमें कि जितने भी MD-80s प्लेन है यूएसए में उन सब का थॉरली चेकअप किया जाए जैक स्क्रू के लिए। अलास्का एयरलाइंस की अगर बात की जाए तो वहां पे उनके पास 34 MD-80s प्लेन थे, जिसमें से 6 जो है प्लेन के जो जैक स्क्रू हैं दे फेल द इंस्पेक्शन। इन्वेस्टिगेटर्स को और अलार्मिंग एविडेंस मिलते हैं जब वो एयरलाइनर की मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं। तो अलास्का एयरलाइंस के मैकेनिक्स इन्वेस्टिगेटर्स को बताते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं जो कीप द प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, और कई बार उनको कट कॉर्नर्स भी करने पड़ते हैं। We interviewed all the mechanics who had worked on these airplanes. We knew that they had been falsifying records or not doing the work they had indicated. 1990 के दशक में जो रिसेशन आया था उसको कोप अप करने के लिए अलास्का एयरलाइंस had slashed their maintenance regime. With air carriers, especially those that may be economically strapped, they're going to stretch inspection cycles to the maximum. The FARs, the Federal Aviation Regulations, set a minimum level of safety. Now, if you're going to operate on a shoestring, you're only going to meet that minimum level of safety. If I'm a good carrier, or I want to be a good carrier, and I want to show that we're going to operate at the highest levels of safety, I'm going to typically exceed the minimums. It's going to cost more, but I'm going to exceed it. A lot of companies that say, wait, the regulations only say I only have to go to here, that's what I'm going to do. Jack screw जो होते हैं in the company's fleet were normally checked after every 500 to 700 flight hours. But 1996 में to cut cost, Alaska Airlines ने ये duration बढ़ा के they were checking the jack screws after every 2500 flight hours. और साथ में उन्होंने एवरेज यूज ऑफ देयर फ्लीट को डबल कर दिया था एक दिन में।
If you had 600 hours between inspection points and greasing points, we have no chance of ever having a metal-to-metal contact situation. But if you put that out to 2,000 hours or 2,500 hours, now what you do is eat into some of these protective stages, these barriers that we have towards catastrophic failure. Proper maintenance becomes even more critical when there is no backup to a component. MD-83 में दोस्तों कोई बैकअप नहीं था when the jack screw failed. So इस स्थिति में it was a matter of life and death जो कि proper maintenance. But ये aviation industry में it is all a matter of dollar and cents. There's a lot of pressure in the airline industry when you look at it, whether you're hauling boxes or hauling people. The fact of the matter is that competition is stiff. And how do you get the competitive advantage against the next guy? How am I going to get more for less? And a lot of times it's labor, the other times it's maintenance. If I can stretch the inspection to 500 hours instead of 400 hours, that saves me a lot of money. To stay afloat financially, Alaska Airlines ने कितने ही लोगों की जानों को रिस्क में डाल दिया था. लेकिन अगर कोई एयरलाइन अपनी मेंटेनेंस रजीम को कटबैक ना करे, फिर भी डिजास्टर्स हो सकती है. It is past midnight in Phoenix, Arizona, और मेंटेनेंस क्रू एक बोइंग 737-700 पे काम कर रहा है और ये परफॉर्म कर रहे हैं सी चेक. ये वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड इंस्पेक्शंस व्हिच अ प्लेन कैन गो थ्रू. आज की रात टोटल 339 इंडिविजुअल चेक्स परफॉर्म किए जाएंगे और जो कि ये सारे के सारे आर मॉनिटर्ड वाया कंप्यूटर. जो भी चेक जो है येलो में आ जाता है वो इट इज एन अनशेड्यूल्ड चेक जो कि अभी अभी स्पॉट आउट हुआ गया है. आज जो है मेंटेनेंस क्रू डिस्कवर करते हैं कि एक टायर विच इज ऑन द मेन लैंडिंग गियर्स इज worn out. Obviously, the stakes are extremely high. Every night we come to work and try to do our best job possible. Make sure everything's in working order so that people get to where they need to go. प्लेन के सर्विस में जाने से पहले इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी सारी मेंटेनेंस के बावजूद भी the worst case scenario comes true. A simple repair can lead to disaster. 13 अगस्त 1985, माउंट ओसुटाका, जापान. वहां पे पड़ा है wreckage from the largest single plane disaster in aviation history. जापान एयरलाइंस की फ्लाइट JAL 123 पिछली रात ही यहाँ पे क्रैश हुई थी जिसमें कि 520 लोगों की मौत हुई थी. सिर्फ 4 लोग ही बच पाए थे इस क्रैश से, क्योंकि ये जो जहाज था बोइंग 747 यूनाइटेड स्टेट्स में बना था. इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB के इन्वेस्टिगेटर्स भी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते हैं इस केस में. Obviously, the stakes are extremely high. Every night we come to work and try to do our best job possible. Make sure everything's in working order so that people get to where they need to go. Soon after the crash, the investigators get help from an amateur photographer. उन्होंने इस 747 जहाज की पिक्चर ली थी just moments before it crashed. फोटोग्राफ से ये बात सामने आती है कि ये जो जहाज था जापान एयरलाइंस का फ्लाइट JAL 123, it was flying without its massive tail fin. टेल फिन जो है उसमें जो है कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रडर और जो ट्यूब्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, वो भी टेल सेक्शन में ही होती हैं. ऐसी कौन सी इतनी जबरदस्त फोर्स होगी जिसने कि इस प्लेन के पूरे टेल फिन को ही उखाड़ फेंका हो. We had an idea that we wanted to find the rear pressure bulkhead because we had a flight attendant who had been interviewed that described an explosion in the back of the airplane and she could see out. So we wanted to focus on the bulkhead. इस प्लेन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को छानते हुए इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता लगता है कि 7 साल पहले ये प्लेन ने लैंड किया था with its nose too high. The tail hit the ground and scraped along the runway. जो प्लेन का पिछला भाग था उसको रिपेयर किया गया था and it included the pressure bulkhead. जापान एयरलाइंस ने बोइंग के टेक्नीशियंस को बुलाया था to repair the cracked bulkhead.
ये जो अनटाइमली वो था रिपेयर था, इसके बाद जो प्लेन को था, इट वाज गिवन अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ एंड इट फ्लू फॉर अनदर 7 years. और यही बल्कहेड जो था, इट बिकेम अ प्राइम सस्पेक्ट फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स. इन्वेस्टिगेशन के दौरान शीट्स जो है, एक ही फाइंड्स अ पीस ऑफ द panel which was spliced into the bulkhead 7 years ago. The repair had in fact not been done correctly. There was only one row of rivets holding that joint together, where there should have been 2 rows of rivets holding the joint together. The mystery of the flight 123 is solved. The Boeing 747 jet went down because of a faulty repair. With only one row of rivets straining to hold that repaired panel into place, this was a disaster waiting to happen, and especially because it was such a busy jet. This particular airplane was used in Japan on a domestic operation, so it made multiple takeoffs and landings on domestic operations, unlike most 747s that make long-range hauls. So this was considered a high-cycle airplane. इन्वेस्टिगेटर्स ये भी कैलकुलेट करते हैं कि जो रिपेयर हुआ था उसकी वजह से ये प्लेन जो है तकरीबन 10,000 फ्लाइट्स और साइकिल्स को विथस्टैंड कर लेगा. और क्रैश के दिन जो था, ये जो जहाज था उसने तब तक 12,000 से ज्यादा साइकिल्स या फ्लाइट रैक अप कर ली थी. 747 जेट्स पे जो कैबिन होता है उसको प्रेशराइज किया जाता है, बट नॉट द टेल. During the flight, the pressurized air presses against the repaired bulkhead. After more than 12,000 flights, this pressure जो है, it stretched the repaired panel to a breaking point. The highly blasted air flew into the hollow tail and blasted it off. और इस scenario में, losing half of the tail, it crippled the plane's hydraulic controls. The Boeing 747 had 4 independent hydraulic systems to power its systems, so it had quadruple redundancy. Unfortunately, these 4 lines came together on the lower part of the spar, and when it separated, it sheared those 4 lines. All 4 hydraulic systems were depleted. Both hands! तकरीबन आधे घंटे तक ये फ्लाइट क्रू जो था, उन्होंने अपने प्लेन को उड़ाया यूजिंग ओनली थर्स्ट. और ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है कि आप अपनी कार चला रहे हैं with only its accelerator, without steering wheel and without any brakes. And despite because of their heroic efforts, it was a losing battle. All this death and destruction rivets down to a missing row of rivets. और ये क्यों हुआ था ऐसा कि 7 साल के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के बावजूद भी ये जो मेटल फटीग है, इट रिमेन अनडिटेक्टेड. और उसके बाद भी कितने ही रूटीन मेंटेनेंस चेक्स हुए होंगे, उसमें भी ये फॉल्टी रिपेयर जो था, इट वाज नेवर फाउंड. इस इंसिडेंट के तकरीबन 2 दशक के बाद भी एयरलाइंस आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर हिडन फ्लॉज व्हिच आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. बैक एट द साउथ वेस्ट एयरलाइंस के हैंगर में, द इंस्पेक्टर्स आर नाउ यूजिंग अ बोरोस्कोप, अ स्मॉल फ्लेक्सिबल कैमरा a tiny flexible camera to inspect the engines. Engines are the heart of a passenger plane. अगर वो काम करना बंद कर देते हैं तो पायलट्स के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता जैसा कि सड़क के ऊपर कार वालों के पास होता है कि साइड में गाड़ी रोक सके सड़क के किनारे. Any amount of crack or metal fatigue, signs of metal fatigue in any of the fan blades can result in disaster. Takeoff check, below the line. Okay, your lights. 21 अगस्त 1995, Atlantic Southeast Airlines Flight 529 and Embraer Brasilia, वो टेक ऑफ करने को तैयार है और उस प्लेन में 29 लोग सवार हैं और उसको जाना है गल्फ पोर्ट मिसिसिपी. It was at the time the fastest, sleekest turboprop around. लेकिन अभी अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचा भी नहीं है, उससे पहले एक जोर का धमाका होता है बाहर की साइड. The sound of that was tremendous. It was as if someone had taken a baseball bat and hit an aluminum garbage can as hard as they could. It was just a
gigantic crashing sound, and the airplane immediately lurched to the left. उसके बाद फ्लाइट क्रू कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन प्लेन जो है डेंजरसली लेफ्ट साइड को ही टर्न कर रहा है. Autopilot, engine control. Help me move it. Over there. The captain and the co-pilot are pushed to the brink of their experience. Here, 100. Help me. Help me. Help me hold it. Help me hold it. ये जो फ्लाइट है ये क्रैश कर जाती है इन जॉर्जिया. Yes, we have a plane crashed in our backyard. A plane crashed? All 29 people survived the violent landing. लेकिन बाद में 10 लोगों की मौत हो जाती है, इनमें 29 में से. जो एनटीएसपी की टीम बुलाई जाती है इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, दे डिवाइड अमंग देमसेल्व्स टू एग्जामिन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लेन. जेम्स हुकी जो है एक एरोस्पेस इंजीनियर है और वो इंचार्ज होते हैं ऑफ द प्रोपेलर मेंटेनेंस यूनिट. We came along a lot of pieces of the wing, came along the propeller assembly that was missing one part of the blade. ब्लेड जो था वो टूट गया था in a very specific fashion, leaving behind all the telltale signs of a fatigue fracture. A fatigue fracture tends to be a very flat fracture. It also has what we call beach marks radiating out from the origin. So you see these radiating concentric rings coming from the origin of the crack. Huki had a good reason to focus on the broken propeller blade. इस इंसिडेंट के 17 महीने पहले बिल्कुल सिमिलर प्रोपेलर ब्लेड का टूटने का इंसिडेंट्स हुए थे ओवर ब्राजील एंड कनाडा. फॉर्चुनेटली दोनों केस में द एयरक्राफ्ट मैनेज टू लैंड सेफली. जिस कंपनी ने प्रोपेलर बनाए थे वो थे हैमिल्टन स्टैंडर्ड. हुकी और उनकी टीम जो है इस कंपनी के जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स होते हैं उनको स्टडी करना शुरू कर देते हैं. दे आर लुकिंग फॉर एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. It's whatever's abnormal. You really don't know what you're looking for until you find it. But you just go through, and there's a lot of routine maintenance that's done, regular inspections, A checks, B checks, C checks. And then there's the non-routine maintenance that occurs if something is broken or a truck hits the airplane or they have a bird strike or something like that. And it's those that you look for. Investigators को ये बात पता लगती है कि इस ब्रोकन प्रोपेलर ब्लेड में पहले भी प्रॉब्लम आई थी. We found out that propeller blade had actually been removed from service once already for a crack indication. And that became the first clue about there may be a problem with that propeller blade and those inspections. Deep inside the hollow propeller, investigators को मिल ही जाता है वो चीज जो वो ढूंढ रहे थे. In the hollow interior, weights are inserted to balance the prop. They are kept in place by a cork, and this simple cork was the trigger in deadly chain of events. About 95% of the cork that's produced in the world is used by the medical industry, and for aesthetic purposes and for sterilization, they like to have the light color, so the cork is bleached with chlorine. Investigators को ये बात सामने आती है कि the moisture in the propeller, it forces the chlorine in the cork to leach out and corrode the aluminum propeller blades. उस टूटे हुए ब्लेड पे वो कुछ और भी डिस्कवर करते हैं. उनको जो है कुछ सैंडिंग मार्क्स भी दिखाई देते हैं on the inner surface of the blade around 4 centimeters away from the fracture. Going through the blade's repair records, हुकी एक इनिशियल के ऊपर आते हैं और वो थे CSB और वो थे क्रिस्टोफर स्कॉट बेंडर के. ये टेक्नीशियन जो है हैमिल्टन स्टैंडर्ड्स के रिपेयर फैक्ट्री में काम करता है
जब ये खबर सुनते हैं क्रिस्टोफर इस क्रैश के बारे में, तो उन्हें पता लगता है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं टूटे हुए प्रोपेलर को स्टडी कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं. And as soon as I heard that, my heart just sank. I was like, I think I might have even cried a little bit because I was just emotionally overwhelmed that, something I had put my hands on, the procedure somebody trusted me to do failed, and because of that somebody had died. ये बात पता लगने की बात क्रिस्टोफर जो थे आखिरी इंसान थे जिन्होंने उस प्रोपेलर ब्लेड पे काम किया था. तो अब एनटीएसपी की टीम ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये प्रोपेलर ब्लेड ने इंस्पेक्शन कैसे पास किया एट हैमिल्टन स्टैंडर्ड. इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं बेंडर को बोलते हैं कि that he must perform his standard maintenance technique on the propeller. He demonstrated how he would go down into the barrel of the taper bore with a fiber optic borescope and look for cracks. And therein lied one of the primary problems. The borescope that he was using had a bright white light that would put a lot of glare back into the inspector's eyes, really did not lend itself to the inspection that was required. Investigators को एक गैप भी दिखाई देता है in Bender's training. He had never been shown what a crack would look like. He was just told to find a crack, and he would look for a crack. और जब वो प्रोपेलर ब्लेड का मुआयना कर रहे थे तो बेंडर को कोई साइंस ऑफ करोशन नहीं दिखाई दिए थे उनको उस ब्लेड के ऊपर, और उन्होंने वही किया जो उन्हें बताया गया था. He polished the inside of the blade. He was given a directive to use a repair to blend out the inside of the taper bore. He blended it out, he did an inspection, and the blending that he had done had roughened the surface, so it actually masked the indication of the crack in the subsequent inspection, and the blade was returned to service where the crack continued to propagate until it ultimately reached critical length and separated. Draft accident report we present to you today involves Atlantic Southeast Airlines Flight 529. NTSB के मुताबिक by polishing the blade, Hamilton standards ने जो है they had erased the signs of a crack. उसके बाद भी एक अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन भी उस क्रैक को नहीं पकड़ पाया था. With no inspection. और जो कंपनी जो थी जिसने की 529 फ्लाइट का प्रोपेलर बनाए थे, it has been now renamed as Hamilton Sunstrand. इस कंपनी की इंस्पेक्शन और रिपेयर प्रोसेस was made more stringent, और कितने केस में तो जो FAA की गाइडलाइंस थी उससे भी ज्यादा एक्सीड करती थी. जो फ्लाइट 529 थी वो it was the last flight जिसमें कि इन कंपनी के प्रोपेलर्स फेल हुए होंगे ड्यूरिंग फ्लाइट. I wish this had never happened. I wish I could go back in time and fix it and take care of it, that it didn't happen. एम्ब्रिया ब्राजीलिया में कितने ही हजारों पार्ट्स होते हैं, लेकिन उस फ्लाइट में it was a simple cork which was the chief culprit of the crash. ASA की फ्लाइट 529 it gives the guidelines to the persons who ASA की फ्लाइट 529 underlines the critical need for proper maintenance, but sometimes a maintenance can create a potential for disaster when a new component is installed into an older plane. Mountain Center, Swiss Air 111 Heavy is declaring pan. We have smoke in the cockpit. It is early morning in Phoenix, Arizona. Southwest Airlines के जो मैकेनिक हैं, they are continuing their work on the maintenance schedule of a Boeing 737. Southwest Airlines जो है थोड़ी अलग है बाकी बड़ी एयरलाइन से, क्योंकि उनके फ्लीट में सिर्फ एक ही प्रकार का एरोप्लेन है और वो है Boeing 737. Tonight the maintenance workers are working on the 700 model, one of the newest 737 planes. You can still operate an old airplane as long as you have inspection protocols.
When you look at some of the cargo carriers, they're operating airplanes that are 30 and 40 and even 50 years old. They're still reliable airplanes. They've been maintained, they've been retrofitted with modern day equipment. बट कंपनी का जो पहला 300 मॉडल था वो भी अभी तक आसमान में उड़ रहा है and it was purchased in mid 1980s. Updating older planes is a standard part of maintenance. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है नई टेक्नोलॉजी पुराने प्लेन में लगाने के बाद it can lead to tragedy. In this makeshift lab are the scattered wreckage of the Swiss Air Flight 111, September 2nd, 1998. उस दिन ये जो प्लेन था it crashed off the coast of Nova Scotia, Canada, and it killed all the persons on board. Scattered from the seabed, the debris is overwhelming. और उसमें शामिल है तकरीबन 250 किलोमीटर लंबी वायरिंग. In Swiss Air, we've had about 2 million pieces of airplane, and we pretty much almost had to look at them all. In the business, we refer to often finding the golden nugget. That's saying, aha, there's the cause of the accident. Somewhere in this wreckage, the investigators hope to find the golden nugget. वो एक पार्ट जो कि बताएगा इन्वेस्टिगेटर्स को कि किस कारण से स्विस एयर की फ्लाइट 111 crashed in the Atlantic Ocean. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से इन्वेस्टिगेटर्स को मिलते हैं उनके पहले क्रिटिकल क्लूज. Do you smell something? Yeah, what is that? Go have a look, I'll take the controls. Roger, you have control. The first officer checks the area around the air conditioning vent. Don't see anything, Ert. There's nothing up there now. और कुछ भी गलत उन्हें नहीं दिखाई देता है वहाँ. Captain Zimmerman is troubled by the smell of the smoke. There it is again. और वो अपने एयरप्लेन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं to the nearest airport. Find the closest place to land, Stefan. और वो रेडियो करते हैं the air traffic control in Moncton. Moncton Center, Swiss Air 111 Heavy is declaring pan. We have smoke in the cockpit. Pan जो है, it is an international symbol to notify the air traffic control of an urgent situation. To fly to the threshold. और ये मेडे डिक्लेयर करने के एक स्टेप नीचे होती है. I guess Boston, we need for... स्विस एयर को जो है हैलिफैक्स डाइवर्ट किया जाता है and it starts its descent. Okay, can I vector you to set up for runway 06 at Halifax? पायलट्स जो एकदम काम और कंट्रोल में लगते हैं. Halifax is just 20 minutes away. They want us to turn to the south. At that point, everything was normal. I gave the pilot an initial descent, and he requested to level off at an intermediate altitude to get the cabin in order for the landing, which took to mean that they needed to pack away dinner trays and things like that. Cabin bus off! Cabin bus off, Roger. But the seemingly calm situation on the Swiss Air Flight 111 blows up into an emergency. Autopilot disconnect! We are declaring emergency now, Swiss Air 111 at time 0124. All my screens are down. I'm flying on standby instruments, maintaining 300. Emergency declare करने के कुछ क्षणों के बाद ही the plane goes silent. It was probably one of the most helpless feelings that any individual can have, not being able to do anything but just sit and watch the target and hope that it would turn back toward the airport. And of course it didn't. रात के 10:30 बजे Atlantic time, the residents of Peggy's Cove hear an thunderous explosion outside their homes. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात पता लगती है कि वो एक आग से डील कर रहे हैं, ना कि
प्लेन के मेल फंक्शनिंग से। We found no anomalies or no problems in any of that flight data that suggested there was a problem with the aircraft. इन्वेस्टिगेटर्स अपना काम शुरू करते हैं। जो एविडेंस मिला था, जो रैकेज निकाली गई थी ओशन से, उस पे काम करते हैं एक एक पार्ट्स को लेकर। फाइनली उनको कुछ स्कॉच मार्क्स दिखाई देते हैं जो कि बताते हैं कि आग जो है शुरू हुई थी कॉकपिट के पीछे की साइड से, और ये डायरेक्टली बिहाइंड द फर्स्ट ऑफिसर के यहाँ से शुरू हुई थी आग। Following this trail, the investigators, it leads to a suspect, और वो था entertainment system in the first class. स्विस एयर के जो MD-11 planes थे, वो first class passengers को they provided one of the most sophisticated entertainment system in the world. Passengers in the first class can choose their own movies, gamble and access the internet. और ये जो MD-11 का जो ओरिजिनल डिजाइन था, उसमें ये एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं था। The system had some major deficiencies. It was getting very hot. It drew a lot of power, and thereby, for example, raising the cabin temperature considerably, because it was always running. They did not install a simple off switch, nor did they install appropriate cooling systems. जब स्विस एयरलाइंस को बताया गया कि देयर इज अ फ्लॉ इन द वायरिंग सिस्टम, तो स्विस एयर ने अपनी बाकी सारे MD-11 प्लेन में से जो था ये एंटरटेनमेंट सिस्टम को डिसेबल कर दिया। Anytime you have an electrical system or you're putting an aftermarket install into an airplane, you run the risk of compromising the integrity of the aircraft itself as it was originally designed. इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात भी पता लगी कि जेट का जो किसी और एक और चीज थी जो इसने कि इस आग को फैलने में बहुत जल्दी मदद करी। दिस पॉलीएथिलीन इंसुलेट वाज कॉमन ऑन कमर्शियल प्लेन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। And in this instance, we did discover a wire that arced in that way, and right next to it was some very flammable material called metallized polyethylene terephthalate covering material that covers the insulation blankets. And it had somehow passed the industry's flammable test, which require the materials to self-extinguish after a reasonable period of time. This thermoacoustical material that was in this aircraft was very flammable, even though it passed a test. It does sustain and it does propagate flame. कॉकपिट से शुरू हुई ये आग बहुत जल्दी फर्स्ट क्लास गैलीज में भी पहुंच गई थी। टेम्परेचर जो था तकरीबन 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। ऐसा जो इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात पता लगी, पैन डिक्लेयर करने के 12 मिनट के अंदर ही आग ने जो है सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिसेबल कर दिए थे कॉकपिट के अंदर। इस इंसिडेंट के बाद स्विस एयर ने जो था सारा पॉलीएथिलीन इंसुलेट जो था वो निकाल दिया था अपने सारे फ्लीट में से, और बाकी इंडस्ट्री भी इट वाज रिक्वायर्ड टू फॉलो सूट। दूसरी तरफ फीनिक्स में जो है टेक्नीशियंस जो है अपना सी चेक कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन द बोइंग 737। टेक्नीशियंस को इस जहाज का रडर भी चेक करना था, और रडर जो है द रडर इज द जेट्स मोस्ट वाइटल कंट्रोल सर्फेसेस, और ये रडर ही होता है जिसकी वजह से प्लेन राइट और लेफ्ट को टर्न करता है। Okay, Seabass, rudder should turn. All right, go ahead. Hey, yeah. A problem here could have terrifying consequences. You're clear on me, लेकिन इतने सालों की मेंटेनेंस के बावजूद भी रडर में से छोटे से पीस को प्रॉब्लम आने पे it killed more than 100 people in the Boeing 737, and not even the most diligent workers would have spotted it. March the 3rd, 1991. United Airlines की flight 585 begins its final approach into Colorado Springs. Another 10 octane. Turn flaps.
सारे 20 यात्री जो सवार थे इस प्लेन में और 5 क्रू मेंबर्स, they are all killed. Investigators from National Transportation Safety Board reach Colorado Springs. My first sense that it was going to take some time to investigate the accident was the damage that we saw in the parts. An aerospace engineer by training, Greg Phillips जो है is in charge of the United Airlines 585 की flight control systems. We focused in after eliminating other flight control surfaces that we thought could contribute to the role. We started looking at the rudder. और investigators के सामने एक बहुत ही critical obstacle है. इस प्लेन के ज्यादातर हिस्से जो हैं, पार्ट्स जो हैं, वो काफी क्रश हो गए हैं या जल गए हैं and they cannot be examined. Luckily, one vital component is still reasonably intact. और ये है उसका पावर कंट्रोल यूनिट यानी कि PCU. एक फ्लाइट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और स्पेशली ड्यूरिंग लैंडिंग दिस PCU is like a car's power steering. When the pilot pushes on the rudder pedal, the PCU uses hydraulic control fluid. When the pilot pushes on the rudder pedal, the PCU uses the hydraulic fluid to convert the gentle movements and the pressure of the pilot on the pedal. It converts it into the pressure needed to move the 737's enormous rudder. The heart of the PCU is the dual servo valve. और ये valve का size जो होता है roughly it is like a soda can. और इसके अंदर होती हैं दो बहुत पतली सी slide which glide past one another. और ये slides जो हैं it directs the flow of the hydraulic fluid which moves the rudder. और जब टेक्नीशियन पावर कंट्रोल यूनिट को खोलते हैं तब उनको वो वर्किंग कंडीशन में दिखाई देता है and it is worse. We didn't have any absolute indication or information that we could point to that said the rudder, power control unit, the servo valve, or any part of that flight control system caused that accident. It's a pass. और सिर्फ चौथी बार ऐसा हुआ था इन इट्स हिस्ट्री. द NTSB जो है रिपोर्ट प्रकाशित करती है विद इट इज नॉट कंक्लूसिव. We had put a lot of time and effort into the investigation and we just weren't sure what had happened. इस घटना के 2 साल के अंदर ही ग्रेग फिलिप्स और NTSB की जो टीम है वो फिर बुलाई जाएंगी इस मिस्टीरियस क्रैश के ऊपर आफ्टर द क्रैश ऑफ अनदर Boeing 737. Hold on. Shoot. What is this? Oh God, no! 8 सितंबर 1994, US Air की फ्लाइट 427 has crashed near Pittsburgh और इस क्रैश में सारे लोग जो सवार थे प्लेन में उनकी मौत हो गई है. When we first arrived at the crash site, first of all, there was no aircraft there. There were only bits and pieces of the airplane. It wasn't really recognizable as an airplane. इन्वेस्टिगेटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता लग गया था कि ये फ्लाइट जो है मिरर इमेज है उस क्रैश की यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 585 की. अपनी फाइनल अप्रोच में यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 585 जो है राइट हैंड साइड को टर्न रोल करी थी और ये वाली स्थिति में US एयर की फ्लाइट 427 जो है उल्टी दिशा में रोल करी थी लेफ्ट हैंड साइड में. दोनों ही स्थिति में क्रूज जो है they were caught surprised. दोनों स्थितियों में ही बहुत स्ट्रगल करने के बाद both the planes had crashed and killing all on board. एक बार फिर से इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं टेस्ट करते हैं डुअल सर्वो वॉल्व बट दे कम अप एम्प्टी हैंडेड और टीम पहुंच जाती है अनदर डेड एंड पर. That unit passed all its operational tests. There wasn't any indication that it had failed. We were going up against an aircraft that had an incredible safety history. It was really everything you could see for 30 years. This has been a great airplane. We were trying to prove that there was something wrong with the straight A student.
इस हादसे के तकरीबन 2 साल के बाद उनको एक थर्ड चांस मिलता है टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। In Phoenix, Arizona, the long night of maintenance is winding down. तकरीबन 30 टेक्नीशियन और 12 सुपरवाइजर्स ने इस जहाज पे काम किया है बोइंग 737 पे, and the team has made more than 400 separate checks and parts have been replaced. Southwest का जो plane है Boeing 737 is almost ready to fly again. Hopefully it'll push back out of the hangar. We'll do some leak checks, make sure everything's working, nothing's leaking. Then it'll go to the gate for departure time. But there is a truth in maintenance. Engineers can only replace those which they know is broken. They can fix it. इतने साल आसमान में उड़ने के बाद भी Boeing 737 में एक बहुत ही हिडन फ्लॉ था जिसको कि अच्छे से अच्छे मैकेनिक भी नहीं ढूंढ पाए थे। 1990 के शुरुआती सालों में 2 Boeing 737 क्रैश हुए थे और उनका पता नहीं लग पाया था अभी तक कि किस कारण से वो क्रैश हुए थे। In both the cases, the jet had spiraled out of control. In 1996, the same malfunction strikes again. It is June the 9th and Captain Brian Bishop is trying to land his plane in Richmond, Virginia. और जैसा कि पहले 2 इंसिडेंट में हुआ था, उनका ये प्लेन जो था, it rolls out of control. I turned the yoke the opposite direction and stood on the opposite rudder pedal. The pedal didn't move for me. We didn't know to what extent, but we knew we had a problem with the rudder. तकरीबन 30 सेकंड तक बिशप लगे रहे किसी तरह अपने जहाज के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर पाए वो, और जैसे शुरुआत हुई थी वैसे ही इस स्पाइरलिंग की खत्म हो जाती है और जेट जो है सीधा ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला जाता है अपने आप ही। We had started the checklist. Almost before I could finish the sentence, all of a sudden there was just a wham. The 737 is once again out of control. Then suddenly out of the blue, east wind 539 is back on control. Then suddenly out of the blue, east wind 517 is back on track. And wasting no time, Captain Bishop brings the plane down on the tarmac. Taxiing in is when I realized my legs were shaking. We launched to the scene. The airplane literally didn't move, stayed at its location, the airport, till we got down there. Suddenly they had a 737 that had a rudder incident that was intact, and they had a pilot who was alive and who could talk about it. I think they were much happier to have the airplane than me. Investigators जो हैं, they zero in on the Boeing 737's rudder controls. Power control unit is tested again and again, लेकिन वो स्थायी तरीके से काम करता है. Careful analysis of the data, a couple of the engineers recognized that it not only stopped working, but actually left became right and right became left. There was actually a movement of fluid into places that it shouldn't have gone. And the reversal is like driving your car. You turn to the right, it goes left. You're not going to figure out this failure mode until you go off the road. And in these cases, that's the pilots were faced with something so unusual that they didn't understand what was happening. What the hell is this? That would explain why the first officer, Chuck Emmett, would keep his foot on the rudder pedal, because he's thinking, why isn't the plane going right? And he's feeling the plane go to the left. Refusing to give up, investigators जो है अब एक दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं. PCU is soaked in dry ice. The PCU is soaked in dry ice and it is blasted with nitrogen gas at minus 40 degrees Celsius. And then it is injected with superheated hydraulic fluid.
and it is then given a command to start working. Investigators को भी ये बात पता लग गई है कि जो super PC जो है which controls the rudders and in the world's most popular airliner can jam in right conditions. और valve जो है जाम हो सकता है without any पीछे कोई निशान छोड़े हुए, वो एकदम जाम हो सकता है. और जब इन्वेस्टिगेटर्स डबल चेक करते हैं अपने रिजल्ट को तो उनके सामने आती है एक और जबरदस्त फ्लॉ. इन तीनों इंसिडेंट्स के बाद पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई कि उनको किस तरह से बिहेव करना है व्हेन दिस सिचुएशन लाइक दिस अराइजेस अगेन. बोइंग ने कितने ही $100 मिलियन स्पेंड किए इन रिप्लेसिंग दीज डुअल सर्वो वॉल्स ऑन द रडर्स ऑफ द 737s which were flying in the world. सुबह के 7 बज चुके हैं. After an 8-hour shift, maintenance finally खत्म हो गया है इस Southwest Airlines के planes के ऊपर. Maintenance records के स्टडी करने के बाद ये बात सामने आती है कि टीम ने जो है 339 scheduled चेक किए थे और 78 unscheduled checks किए थे. I think each one of us out here has a sense of pride in themselves that we do the best job that we possibly can day in, day out. Obviously, the stakes are high. Every life is important. Despite the horrors of an air disaster, they are still rarely there. और ये बात देखते हुए कि कितने ही planes, commercial planes जो हैं लैंड करते हैं और कितने ही planes टेक ऑफ करते हैं. Sometimes we obscure the fact that we fly millions and millions and millions of people day in and day out without putting a scratch on even the airplane, let alone the people. This is the most amazing system. This system depends on the dedicated team of professionals who are committed to take care of these 21st century masterpieces, planes so well built. They are committed to fly as long as we are willing to take care of them. We've learned now how to inspect and maintain these things and even rebuild them to where they should have an indefinite life. They're built tough and they should be able to last forever if they're maintained properly. So दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. ये शो जो आप सुनते हैं हर हफ्ते सुन रहे हैं ऑन योर फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, जो कि है फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी थी ऑन द टॉपिक फेटल फ्लॉ. अगर आप मेरे शो को रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मेरे जो मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhambri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com. आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, वहां पे जाके भी अपना फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं. तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो. मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और करेंगे बातें उस आने वाले शो में किसी नई दुर्घटना की, किसी नई डिजास्टर की. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस.